Hello everyone, I hope every one of you is doing very good and solving more and more number of custom modules, mixed bag questions, giving GTs and revising the same content again and again. Now, if it wouldn't have been any postponement, today was the day when your NEET PG was supposed to be. But now, from today, around 49 days are left for the new date, that is 3rd of August. So, from today, around 49 days are left for NEET PG, and you're going to apply it from tomorrow. That's why 48 days is taken into consideration. I have divided the entire period between this preparation phase into different 4 sections. So, let's see 15, 15, 13, and 5. Now, before I jump to the initial 15 days, I want to tell you the importance of the final 5 days. See, the final 5 days are the game changer. This is the place where the ranks can flip from 5000 to 500 or from 500 to 5000. Now, why is this important? कई लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि लास्ट के 5 डेज में करना क्या है. And then people keep on asking छोटी कॉपी क्या है, 20th कॉपी क्या है. That should not be your point at this point of time. So इसीलिए I'm telling you, start making 20th notebook और छोटी कॉपी from today itself. Now इस 20th कॉपी में आपको रखना क्या है? इस 20th कॉपी में you are going to keep the important plus the volatile stuff. Not only the important but the volatile stuff. For example, you're reading breast cancer and the BIRATS is always making you confused. Write it. If you're not going to write it, take a screenshot and try to generate a folder in your iPad or the tablet you're using and just keep all these important images there. This is the images that you are going to see before attempting the next GT. Okay, or at the last time when you are going to appear for the final exam. So that's how you're going to make your choti copy. Okay, now let's go further. What is the importance of the last 5 days? I have already told you that the last 5 days is the most important because you should know how to revise your choti copy, read your source passively. Now your mind at this point of time should be relaxed and calm. Along with that, this is the only gate for the victory. Discuss about the first 15 days that starts from 16th of June to 1st of July. अब देखो मैंने इस पूरे पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है into 3 main important categories. Those people who are constant, who were constant and were aiming for 15th, वो लोग बहुत निराश हुए हैं कि यार एग्जाम पीछे क्यों शिफ्ट हो गया है. अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नया स्टार्ट कर रहा है पोस्टपोनमेंट के बाद, एंड देन there comes the mid rankers, mediocres, जो कि इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर द कांस्टेंट वंस. कांस्टेंट वंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. दोज पीपल हु स्टिल हैव नॉट टच्ड 100 करेक्ट्स, दोज पीपल who are between 120 to 140, and everyone who is above 140. So now let's first talk about those who are not able to touch 100 corrects because this is for you. Retrograde approach, everyone is knowing क्या होता है. If you don't know, you can watch any one of my video. Now retrograde approach के बाद you are able to know that आपके weak subjects क्या है, आपके strong subjects क्या है, कहाँ पे आपको focus करना है. Everything you are well aware. Okay, now on this basis decide whether you are going to have the RR of certain of the subjects or you are just going to have the questions. At the same time, please remember 3 main conceptual subjects karo. If you are not able to score less than 100 and you are still scoring below 100, it means some of your concepts are missing, and those 3 conceptual subjects are none other than but your biochem, physiology and pathology. Please focus more on physiology and pathology. I will tell you how. So suppose you are reading renal system. In renal system, do the physio of renal, do the patho related to the renal, also integrate pharma in between. And what is it? It is the medicine. Physio, patho, pharma, it contributes to your medicine. Now roughly physio will give you 10 questions, patho will give you around 25 questions, pharma will give you around 15 questions, and medicine is going to give you around 25 questions, or not 25 so 20. roughly कितने questions यहाँ पे सही हो गए हैं? Imagine you are getting around 70 to 80 questions correct, and if not even 70 to 80, you are actually reading for about 60 question. इतना तो मानते हो ना? 60 question अगर आप सिर्फ 4 subject से लेके आ पा रहे हो, you're going to increase your marks, man. You are going to at least go above 100 or 120. वो बार पक्का टच हो जाएगा. So please have the very strong concepts of physio and patho. At the same time, biochem, it is very highly volatile. You will not be able to understand कि न्यूक्लिक एसिड में क्या हो रहा है, ओरोटिक एसिड यूरिया कैसे हो रहा है, या फिर यूरिया साइकिल में क्या हो रहा है. You will not understand if you are not having that concept. See, I always believe that biochemistry is something related to Ratna, but it's not related to Ratna. It is the most important subject for Samajna. So please try to understand this subject. Next, come towards the short subject. When you talk about the short subjects, people
यूजुअली मिस शॉर्ट सब्जेक्ट. आई हैव सीन मेनी ऑफ पीपल कि यार एनेस्थीसिया ही तो है, लास्ट एक दिन में भी ऊपर ऊपर से देखूंगा तो हो जाएगा, डर्मा ही है, साइकी है, हो जाएगा. इट डजेंट हैपन लाइक दैट. सोचो 5 भी अगर इन 8 to 9 सब्जेक्ट से है, 45 क्वेश्चंस वहां पे भी आपके बन रहे हैं. अगेन यू कैन ग्रैब देम टोटली इनटू योर बैग. सो साइकी, डर्मा, एनेस्थीसिया, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड एक्चुअली मास्टर दीज शॉर्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट बिफोर गोइंग. इफ यू आर नॉट स्कोरिंग above 100, you should at least master these short subject, क्योंकि इनके questions वैसे के वैसे ही टपक के आएंगे. They will directly ask you psoriasis के nail changes. They will directly ask you schizophrenia and the DSM-5 or the ICD-11 criteria. That is going to be same for everyone, and that's what you are reading every day in any of the notes. So why are you leaving this short subject? You have to focus more on short subjects. Next, mixed bag questions and subject test. I have told you multiple times, every day at least around 100 questions should be done by each one of you. That should be the mixed bag question. Mixed bag में आप last के अपने 5 weak subjects को target करो at the same time. If not last के 5 weak subjects, if you feel you want to target the ऊपर के 5 strong subjects, उनको ही target कर लो, लेकिन mixed bag दो. और अगर ये ऐसे करके नहीं करना चाहते हो, just 19 के 19 subject का mixed bag लगाओ and करो, because it's not how much you read, it's how you're going to solve the question on that day under so much of pressure. That's why this mixed bag and the subject has become very important. Now, one very golden advice for all of you, revision of a subject should be done every day for around 1.5 hours before sleep. अब खासकर उन लोगों के लिए who are scoring below 100 corrects, I will suggest short subjects को consideration में लो. माइक्रो, PSM, OBG, ये कुछ एंटाइटीज हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. सो नाउ कमिंग टू द अनदर set of people, that is 120 to 140 correct. Now again here I have divided into 2 main categories: going with the same pace and those people who have lost momentum. Now those people who are going with the same pace, I'm going to tell you 60-40% rule. 60% of your day should look like solving more and more MCQ and 40% डे में आपको रिविजन करना है. अब ये MCQ जो होगा वो कस्टम मॉड्यूल से रिलेटेड होंगे, हो सकता है सब्जेक्ट टेस्ट हो सकता है आपके फेवरेट PYQs हो या वॉट एवर, बट यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस in your day. Second thing, it is the right time to strengthen the concept. I'm not saying make the concept, because I feel that this group of people have their concepts but it's not crystal clear. So it's better you strengthen your concept. Okay, now you have to slightly change in the way of reading. So suppose everyone has different ways of reading. I'm not saying कि आप रात को मत पढ़ो, आप सुबह पढ़ना शुरू कर दो. It will not help. You have that thing since going on. I'm not going to change it, but a slight change in the way could be seen. So for example, आप ऑब्स गायनी पढ़ रहे हो और ऑब्स गायनी को आप दिन के 3 दिन पढ़े ही जा रहे हो. I think what you can do is, when you are reading OBG, just read OBG for half of the day, and after that you can just add any one of the other subject in it. Like for example, you can add any Dharma. Just add Dharma for last 1.5 hours. That's what I mean in the slight change in the way. Something similar to this thing. So that's what slight change in the way could be done. Similarly, PYQ solve करो, but PYQ का bias मत रखो. See, many of the people have this PYQ bias, and it has been told multiple times with different faculties. Please do not have this PYQ bias, because once you have solved so many PYQs and multiple times, ना, you will get this bias. So I got so many queries regarding the same कि सर PYQ जब करता हूँ तो 100 में से 100% आते हैं, लेकिन when I am doing the custom module मैं सिर्फ 25 या 30 स्कोर कर पाता हूँ. What to do? Because you have just mastered इतने बड़े ओशियन में से एक छोटा सा पार्ट you have mastered. The entire thing is left, and this entire thing, anything could be tested from here in NEET PG. That's what you have to master, the art of solving MCQs rather solving the fixed amount of MCQ. Now here I feel you should go and read the content again. I feel that these group of people would be losing somewhere in the content they are having. Maybe some things are not clear, so that's what I meant by the strengthening the concept also. So try to better up your content, give GTs. Supplementation has to be done here. Supplementation of these 4 subjects should be done by everyone falling under this category. When I mean by supplementation, supplementation का मतलब है आप बहुत बार फार्मा पढ़ चुके हैं, मे बी सेम फैकल्टी से पढ़ चुके हो. You can just go and ask your friends and change the faculty for a brief moment of time. For example, फार्मा का आपको फार्माकोकाइनेटिक्स समझ नहीं आता है, जनरल फार्मा समझ नहीं आती है, and you are reading from Dr. Ranjan Patel. Maybe you are not very happy the way he is telling you, but
you just go and switch back to any other of the platform, maybe from Govind Garg sir, and then try to compare in your mind कि यार मेरे को कहाँ से ज़्यादा समझ आ रहा है. कई बार कुछ टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि एक फैकल्टी से ही समझ आ जाए. Sometimes you can have this supplementation technique from different sources, so that's completely fine. I'm not saying to completely change the source, but supplement the source. Similarly, micro, Preeti ma'am is there, Shivika Sethi ma'am is there, Patho, then Ila ma'am is there, Preeti ma'am is there, okay, and OBG, Dr. Sakshi ma'am can be done. Now, talking about those people who have lost the momentum, देखो भाई, आप लोगों के लिए सबसे important है एक GT दो. अपना रियलिटी चेक आपको खुद पता चल जाएगा कितने गहरे पानी में हो या कितने उठे हुए हो. जीटी रियलिटी चेक मिलने के बाद गो रेट्रोग्रेड एंड कंपेयर. जीटी कंपेयर करो, पोस्टपोनमेंट से पहले जो जीटी दिया था उसे कंपेयर करो. हो सकता है नाउ द ईएनटी इज द वीकेस्ट एंड देयर ईएनटी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट. दिस कुड हैपन, दिस हैज हैपेंड विद मी मल्टीपल टाइम्स. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गो एंड रेट्रोग्रेडली गो एंड कंपेयर. ठीक है, कंपेयर करने के बाद अब देखो कि अभी पोस्टपोनमेंट के बाद कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका वीक पड़ चुका है. नाउ सपोज योर वीक सब्जेक्ट हैज बिकम माइक्रो नाउ एंड द इजीएस्ट सब्जेक्ट इज करेंटली सपोज बायोकेम और पैथो. स्टार्ट विद दिस ईजियर सब्जेक्ट फर्स्ट. नाउ स्टार्ट विद द ईजियर सब्जेक्ट. क्योंकि आपने मोमेंटम क्यों खोया है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोर्डम में जा चुके थे. बोर्डम में जाने के बाद अगेन अपने वीक सब्जेक्ट को लेना आपको और बोर्डम दिखाएगा. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द ईजी सब्जेक्ट. दैट इज व्हाट वी कॉल द baby steps also. ठीक है, then go to the intermediate and then to the weaker subjects. Now suppose your weak subject is surgery or OBG or PSM, which are the longer subjects, then it comes under the special criteria. Special criteria क्या है? Daily 1.5 hour of the revision you have to do for these long subject. प्लीज़ रिमेंबर, जो मैंने 1.5 आवर्स सबसे पहले वाली कैटेगरी में बताया था, इस कैटेगरी के लिए 1.5 आवर्स का रिवीजन लॉन्ग सब्जेक्ट के लिए होगा. अगर इफ दैट लॉन्ग सब्जेक्ट इज वीक, इफ इट इज माइक्रो और समथिंग, नो नीड टू डू. यू कैन जस्ट प्रिपेयर द स्ट्रेटेजी फॉर योर सेल्फ कि यार माइक्रो मेरा इतना वीक नहीं है तो ठीक है, आई विल नॉट डू समथिंग फॉर दिस. सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय द स्पेशल केसेस. नाउ again, one very important thing, when I used to lose the momentum, what I used to do is that helped me, maybe it will help you. I used to do the image based questions, especially related to patho, pharma and micro. Sometimes just solving the histopath, looking at the derma images or the micro images will help you a lot. Now talking about those who are getting greater than 140. Now everyone who is getting this greater than 140 ना, ये वो लोग हैं जो 140 से 170 जंप कर सकते हैं and vice versa भी हो सकता है. So for this, flip game is on. What you have to do is you have to solve more and more questions. What you can do here is try to just solve the questions for 1 week. 1 week तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और एक जीटी देखो कितना इंप्रूवमेंट आता है. बिकॉज फॉर these people I feel content is definitely not a problem. उनका कंटेंट पूरा का पूरा क्लियर है. what you guys are lagging is the MCQ solving skills. इस केस में क्वालिटी बेटर होनी चाहिए क्वांटिटी से. it's not something that you have to focus on more and more content. no, the quality should be there. no need to supplement from anything. you are having a very good knowledge. no need of supplementation. what you should do is you can give the GT every 4 to 5 days for your good question solving skills. Start from the weak subject, then go to the strong subjects, and then to the intermediate subject. This should be your way of again and again reading the content. For example, your weak subject is micro, first start with micro. Now what does this outshine subject means? Outshine subject वो होते हैं, suppose for example, at least find any 4 outshine subject. Maybe it could be short subject, or maybe it could be also the long or the intermediate subject. So for me, derma, micro, patho and psyche, these were the 4 most outshine subject. का मतलब ये है, even if I don't read it one day before the exam, I was such confident कि यार ठीक है, last day if I'm not even able to read all these 4 subjects, I'm going to score good. I know the concepts of these subjects. So इन outshine subject को जो already आपके बहुत better subject है, इनको और ज़्यादा outshine करो. and primarily ना इसमें short subject को consider करो, because the short subject gives you the direct questions. So that's why I say that outshine subject should be more and more outshine. polish करते रहो उसे. अगर डरमा है, डरमा बहुत अच्छी लगती है, साइकी बहुत अच्छी लगती है, प्लीज 50 क्वेश्चंस डेली उसके करते रहो. ऐसे ही करो कि एट लास्ट डे, इवन इफ यू डोंट सॉल्व दीज डर्मा और द साइकी क्वेश्चंस, यू आर हैप्पी दैट ओके, आई डोंट नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आई एम ओके. जितना भी है मैं पेजेस फ्लिप करके 1 आवर में डर्मा, 1 आवर में साइकी खत्म कर सकता हूँ. दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दीज आउटसाइड सब्जेक्ट. दैट्स व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर द फर्स्ट 15 days for those people who are constant and were aiming for 15th of June. Now
Coming to the other people who started new post postponement, so they could be the fresh interns or they could be the droppers due to any reason. If they are the fresh interns and आपके concepts clear हैं, बिना कुछ सोचे समझे BTR रैपिड रिविजन DVT करो, उसके साथ END and TND दो, PYTs ज़्यादा से ज़्यादा देखो greater than the PYQs, and then what you have to do in the next cycle I will tell you, but for this 15 days you have to go and do this thing only. ठीक है. At the same time अगर आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना है तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पे ज़्यादा टारगेट करो रादर देन फोर्थ एंड थर्ड ईयर, बिकॉज यू आर वेरी फ्रेश. एंड अभी इंटर्नशिप में भी वो सर्जिकल पोस्टिंग गायनी की पोस्टिंग्स हुई हैं, एंड फोर्थ प्रॉफ बहुत रिसेंटली आपने पास किया. द क्लिनिकल पार्ट इज वेरी क्लियर फॉर यू गाइज, एंड यूजुअली नीट पीजी loves to ask these core clinical questions in the OBG, surgery and ortho. So I guess if you have done the internship well, you would be knowing all these things. At the same time, those people who are lagging in the concepts, उनके concepts इतने clear नहीं है, like even in the 4 years they did not read much. So what you can do is, for you 15 days की जगह आप 20 days लो. 20 days में RR या BTR करो, ठीक है. प्राइमरली फोकस मोर ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, देन गो फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ ईयर. उसको सप्लीमेंट करो PYQs से, then go to the PYT. Why I'm telling you? Because your concepts are not clear. You should know कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है. You should know कि डर्मा में psoriasis, lichen planus is important. That's why just go and solve the PYQ so that you can just directly jump and go and read कि PYT क्या important है. Along with that, most important, once you are done with this, again go back and try to read in that way. So that's what I told you, right? कि अगर साइकी में आपको लगता है मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया में प्रॉब्लम हो रहा है, you can go and just read the schizophrenia part. But if you feel that नहीं, मेरा साइकी most of the things normal होता है, so you can just again go and directly solve on the questions only. Now weak subjects, even after the 20 days you have to go for the PYQs. What does that mean? इसका मतलब है आप अपने weak subjects को, अगर आपको लगता है कुछ subject बहुत weak है, 20 दिन के बाद भी आप उसे लेके जाओ, PYQ सॉल्व करते रहो. Okay, that's what I mean by those people who are lagging in the concepts and are the freshers. Now, suppose if you are the droppers due to any of the reason, you have to focus on BTR or the RR for at least 20 days. Give a GT after 20 day, that is on the 21st day. Analyze कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखो. अगर तुम्हें लग रहा है सिली मिस्टेक है, that's again boil back to the same thing, that retrograde approach क्या होता है, ठीक है. Now for you people ना, PYTs are very very important. You should know the PYTs, very important. Surgery, OBG, micropath, micro and biochem, these 5 subjects, micro दो बार आ गया, these 5 subjects should be read by you in great details. And for you, quantity should be equal to quality. That is 50% time you have to give to the questions, 50% time you have to give to the content. That's what these people, droppers, should be reading from now. Talking about those people who are the mid rankers, identify your flaws. Same things, you have to identify your flaw कि क्या आप कर रहे हो, फैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक्स हैं, रिकॉल बेसिस है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. टेक सब्सक्रिप्शन फॉर एनी ऑफ द ऑफलाइन RR, BTR, TND, बिकॉज यू आर द मिड स्कोरर्स. इवन फॉर यू ना, कंटेंट इज नॉर्मल. ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट की कमी है. सेम थिंग, इट बॉइल्स बैक टू द सेम थिंग ऑफ दिस 120 to 140. एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज द सेम फॉर 120 to 140. यू कैन गेट बैक एंड सी दैट ऑल्सो. GT plus daily questions have to be done. Invest into OBG, surgery, PSM? No. Invest into the other rest of the subjects because you are the mid scorers. ये तीनों आपके टायरिंग सब्जेक्ट्स है. आपको स्ट्रेटेजिकली फिजियो, पैथो, फार्मा, माइक्रो, डर्मा, साइकी एंड ऑल द अदर शॉर्ट सब्जेक्ट्स में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है. RR of OBG and surgery you have to watch. If you can watch the OBG and surgery RR if ever you feel कि मुझे RR देखना है, and try to do 2 subjects in a day. That's how your plan should look like. So this is the first 15 days plan for the 3 main important. I think मैंने आपकी सारी क्वेरीज को 3 कैटेगराइजेशन में और सब कैटेगराइजेशन में करके सारी क्वेरीज को सॉल्व किया है. एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट कमेंट. Now let's see how these 15 days will look like. You should divide your day into 4 main things. Please, ये चीज सबसे important है. This ending part is the most important. First, एक ongoing subject होना चाहिए, एक favorite subject, एक से ज़्यादा subject test and custom module. This should be your day looking like. So suppose you are giving major chunk to OBG. So let's start from 16, 17, 18 को I'm going to do OBG. तो मैंने OBG पढ़ा. Now in OBG how am I going to read it? Either I'm going to read through the notes or you can watch the RR passively, whatever suits you. ठीक है? For me, viewing the videos was better rather than flipping up the notes and then go for the questions.
दिस शुड बी योर अप्रोच. अब ये क्वेश्चंस की लिमिट कितनी होनी चाहिए, आई डोंट नो. It can be from 50 to 500 or whatever. So there is no limit for the questions. Next, 16, 17, 18 के लिए ही एक फेवरेट वीक सब्जेक्ट नहीं, एक फेवरेट सब्जेक्ट को आपको इन्वॉल्व करना है जिसमें आपको मजा आता है. दिन भर ओबीजी पढ़ रहे हो, सर्जरी पढ़ रहे हो, पीएसएम पढ़ रहे हो, टायरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रात के टाइम पे यू रिक्वायर सम relief, right? So what you can do is micro either for 3 days or psyche for 2 days, derma for 2 days. You can continue whatever is your favorite subject, क्योंकि ये again एक बहुत subjective experience है, तो whatever is your favorite subject, go for that. Now it's very important, 1 या 1 से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट टेस्ट देना. और ध्यान रहे ये ना 1 घंटे में सब्जेक्ट टेस्ट देना भी है एंड उसको रिव्यू भी कर लेना है. यू हैव टू बी वेरी क्विक इन रिव्यूइंग एंड ऑल्सो गिविंग द सब्जेक्ट टेस्ट. नाउ ऑन द फर्स्ट डे व्हेन यू आर रीडिंग ओबीजी, सो फॉर एग्जाम्पल आपने 15 यानी कि आज लास्ट सपोज आपने ईएनटी करा है या फिर आपको ईएनटी बहुत वीक लगता है, सो द नेक्स्ट डे ट्राई टू गिव द subject test of the previous day subject. Then also the another day the same previous day subject has to be chosen, and then the final day जब 18th को लास्ट में OBG का फाइनल डे होगा ना, उस दिन start giving the subject test of OBG और फिर ये 2 दिन और चलेगा. So in this way in a day you have clubbed 3 subjects. Imagine आपने उसका कंटेंट भी पढ़ लिया है, आपने उसके MCQs भी कर लिए हैं और आपने उसका सब्जेक्ट टेस्ट भी दे दिया. हाउ ब्यूटिफुल दिस कुड बी. द एंटायर थिंग विल बी कमिंग इनटू योर माइंड एंड फ्लडिंग थिंग विल बी हैपनिंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टम मॉड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कस्टम मॉड्यूल. ठीक है, 50 करेंट सब्जेक्ट दैट इज OBGYN, 50 लास्ट के 5 वीक सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इसमें से कोई वीक सब्जेक्ट है नहीं, बायोकेम है या फिर रेडियो है, ऑर्थो है, पीडिया है, साइकी है. ठीक है, so then again these 5 subjects will be incorporated into those MCQs. So 5 plus 1 6 7 8 subjects in a day you are doing. Along with that, GTs at least has to be given, at least 2 by everyone. Now you can go for any of the GTs, Mero, Cerebellum, Prep Letter or any other platform, but I will suggest you कि एक बार ना अपना platform बीच में change ज़रूर करना. It's not like just sticking to one platform only. Apart from that, start making छोटी copy from now. एंड जितने जीटी इनकरेक्ट है और आपको लग रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट, इनकॉर्पोरेट इनटू छोटी कॉपी ओनली. दैट्स व्हाट शुड बी द फर्स्ट 15 days प्लान लुकिंग लाइक. ओके, दैट वाज अबाउट पार्ट 1. नाउ टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट 15 days प्लान. अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा, अब हम कंटेंट की तरफ ज़्यादा जाएंगे और MCQs की तरफ कम आएंगे. एंड अगेन सम ऑफ द डिविजन्स आई विल बी डूइंग एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस. बट अगर आप पूरा देखो इन 15 days में या आगे के रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग डेज में, द ओनली थिंग आई विल बी फोकसिंग अगेन एंड अगेन इज सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस. Solve more and more questions. Entertainment. So keep studying. Bye.